So Tanja, welcome to our university, welcome to India, welcome to Madhya Pradesh, welcome to Bhopal, which is capital of Central Indian state of Madhya Pradesh. And we are very glad that you are here. We are very happy that your experience, your past experience as a journalist, as an academician, as a person who is visiting so many countries. Recently, you conducted this conference in Suriname about a year back. We are really happy, we are privileged that you are here and that you have come here. And as we say in our Indian culture, that Atithi Devo Bhava, this is a Sanskrit phrase, that for us, Atithi means guest. He is like God for us. This is our Indian, our old Upanishads and Vedas, they say this. So we always treat our guests as one who have come here and we will be blessed by them. So we will be blessed by your knowledge. We would like to use your every single minute spent here so that our students, they get maximum from you. Apart from this workshop, as you know, our other departments of journalism, mass communication, electronic media, and which is the fourth department, and new media technology. Students from these departments, they will be meeting you, they will be asking questions to you, you may interact with them so that they also get some exposure. And you also get to know about the diversity of our country, the diverse background from our students from Nepal. And this audience is mainly of our research scholars who will be doing PhD and other similar things. Unfortunately, because of some development in India today, the educational institutions and all the public places, they have been, as a precaution, they have been asked to shut down. So that is the reason why we couldn't have our students here. But since you are here and from after tomorrow, things will be all right, so you'll be able to interact with our students also. And since, because this audience, I suppose most of them, they are scholars, so I don't think that if I'm speaking in English, it is any issue. या मुझे हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के बोलना चाहिए? शीतल जी बैठे हुए बड़े संपादक हैं, भोपाल के कई सारे अखबारों में रहे हैं. But we have this, we have developed this native language, English, and that has been accepted even by Google. So I think Google also has this option, whether you want to type in English, Hindi, or English. So English is what now I'll be speaking. जब से मैं इस विश्वविद्यालय में एज वाइस चांसलर मैंने ज्वाइन किया, तभी से हम सब लोगों की ये बड़ी कोशिश थी कि यूनिवर्सिटी की जो डायरेक्शन हो वो एजुकेशनल एक्सीलेंस की तरफ हो और एकेडमिक एक्सीलेंस, एजुकेशन में एक्सीलेंस आए, इसको लेके तरह तरह के स्टेप्स हम लोग पिछले 8-9 महीने में ले रहे हैं. और उन्हीं स्टेप्स की कड़ी में ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये भी उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में एक कदम है. I hope you could understand what I'm trying to do. हम लोग की कोशिश है कि निरंतर हम लोग छोटे छोटे कदम ही बढ़ाएं. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आप सभी रिसर्च स्कॉलर्स हैं और आप सभी लोग हमारे पार्टनर हैं इसमें.
तो आप लोगों की तरफ से दूसरी तरह के प्रयास हो रहे हैं, हमारे विश्वविद्यालय की जो पूरी फैकल्टी है, they are also trying their best. Gradually, we are moving towards that excellence. Such kind of conferences, seminars, they do contribute towards that excellence. As far as today's topic is concerned, digital communications in developing countries. We being a developing country, we had this concern of digital divide, say some 10-15 years back. We used to say that हमारे देश में digital divide है. एक वर्ग वो है जो कंप्यूटर तक जिसकी एक्सेस है, एक वर्ग वो है जिसके पास में नहीं है. और आप याद करिए 90 के दशक की बड़ी चिंता का विषय होता था कि how to bridge that gap. But the way mobile technology has developed, we can always say that the gap is gradually narrowing. Today we have largest number of internet and mobile users after China. China may be having largest number of mobile users, internet users, but their country does not allow outside players to come in. They don't have the kind of diversity which we have. We have some 22 languages. कितनी है? राजभाषाएं कितनी है? Officially 22 है. Officially we have 22 languages. 22 languages. So on our currency notes, you will find that all the languages they are written there. And fortunately, probably this is the market. I mean, Google also recognizes all those 22 languages. So when you register your phone, it will ask you whether you want to go in Gujarati, Tamil, Malayalam, Telugu, Assami, Marathi, Hindi, English. But again, what? Pardon? even we don't remember. So we have so much of diversity, but the good thing is that again India is one country on this earth which again have largest number of English speaking people. The way we have developed after 1947 is before everybody. So coming back to the topic of digital communications, digital communications definitely has helped our 140 crore जो लोग हैं. They have benefited from this. Now information is no longer a privilege of few people. Now knowledge is everywhere. But again, that information explosion has its own perils. Because of that information explosion, because of the information and knowledge becoming easily accessible to all, somehow it had happened that in the name of knowledge, fake news has started spreading. I always use this phrase that the social media, which is one part of digital communication, because digital communication is everything. When you say digital communication, when you order food on Zomato or Uber Eats or Swiggy, that is also digital communication. When you buy your railway ticket from the internet or your mobile, that is also digital communication, artificial intelligence. So digital communication is a big thing, but I will limit myself to social media aspect only. So the phrase which I always use, that अज्ञान को ज्ञान के नाम पर परोसे जाने की जो परंपरा चालू हुई है. I'm repeating this word. अज्ञान को ज्ञान के रूप में परोसे जाने की जो परंपरा चालू हुई है. In English you may call it how अज्ञान को क्या कहेंगे? Ignorance. How ignorance
or misinformation is being sent as knowledge, is being distributed as knowledge. That is a big challenge before us. When I say us, so the us means people who are responsible for creating content. We are not scientists. We don't design computer programs. But yes, we have a big department of computer. They do design computer programs, algorithms, artificial intelligence. So we are also into that. But I am limiting myself to the content part. So the way fake news has created challenges, and especially we people, we have failed in containing that. We have failed to educate people that whatever coming through digital communication is not gospel truth. You should understand that digital platforms are mere platforms. The actual knowledge, the actual information, that is with intellectuals only. So the WhatsApp University started controlling social narrative, the cultural narrative, the political narrative, and we are seeing manifestations of that. Even today, I mean, the governments, they have to clamp down Section 144 on social media. So these digital communications, they definitely need to be relooked again and again, whether they are good for our country or not. I mean, somebody who is illiterate, he has access to YouTube, he simply speaks, YouTube बताओ ये आलू की सब्जी कैसे बनती है, and YouTube will start telling you आलू की सब्जी को बनाने का तरीका, वीडियो आपको दिखना चाहिए. अब now the fact remains, वो कौन सा आलू की सब्जी बनाने वाली जो विधि है जो YouTube पर डली हुई है, क्योंकि उसको तो वो सत्य मान रहा है. उसको ये पता नहीं है कि YouTube पर आया हुआ वीडियो किसी रेस्पेक्टेड कंपनी, रेस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का बनाया हुआ है या कुछ ऐसे लोगों का बनाया हुआ है कि जो आलू की सब्जी में जहर मिलवाने वाले हैं आपसे. क्योंकि अगर उसने कह दिया कि आप आलू की सब्जी में ये 4 धतूरे के बीज भी लाइए और वो मिला लीजिए, तो मिला लेगा, क्योंकि वो तो उसको सच मान रहा है. तो ये कैसे तय हो? तो वहां पर जो हमारे जो गेट कीपर्स हैं, जो these big multinationals like Facebook, Twitter, they have a big responsibility. Today, 9th of November, is a big day in many senses. This will become a big day in the history of our country also. It is a big day for Europe also, because this was the day when the wall between East and West Berlin was demolished. और वो दीवार इसलिए उस दिन गिर गई क्योंकि एक मिसइंफॉर्मेशन हुई. क्या मिसइंफॉर्मेशन हुई उस दिन? We all know that during 1989 the Cold War was gradually thawing. धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पनपी थी. When Mr. Reagan, he went to Berlin and standing in front of the Brandenburg Gate, he asked Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall, open the gates. और उसके बाद में वहाँ जो बड़ा म्यूजिक कंसर्ट हुआ, तभी से ऐसा लगने लगा था कि ये जो
विश्व जो बटा हुआ था रूस और अमेरिका के कैंप में, और इसके कारण जो सोशलिज्म, कम्युनिज्म और जो कैपिटलिज्म की लड़ाई तो धीरे 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 कम हो रही है। वातावरण बन रहा था। गोर्बाचोव की ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति, खुलेपन की नीति धीरे धीरे आ रही थी। तो अब ये तय होने लगा, जिस तरह से प्रेशर बढ़ने लगा बाकी मुल्कों पर, पोलैंड पर, रशिया पर, जो आसपास के रिफ्यूजीज जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ये हुआ कि ये अब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में भी जो बहुत ज़्यादा ईस्ट से वेस्ट में जो लोग जाते थे, इनको लेके भी कुछ नियम कुछ ढीले किए गए। तो बैठ के चर्चा हुई, बने कानून बने आपस में उन दोनों के बीच में, और ये तय हुआ कि इनके लिए अपन लोग चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं कैसे होगा। तो वो जो चर्चा होती थी उस दिन की, हर दिन की चर्चा को शाम को एक उनके एक अधिकारी प्रेस वार्ता के रूप में बताते थे कि साहब आज उन लोगों की इतनी चर्चा हुई। उसी समय ईस्ट जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे, आई थिंक GDR हैड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर होनेकर, एरिक होनेकर, मस्ट बी जो भी GDR। So he had already resigned, वो सबसे ज़्यादा उसके रशिया के करीब थे। तो वो जो जिन महोदय ने, I'm forgetting the name, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, चूँकि वो एक अधिकारी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मैं इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि our topic is communication and my concern is mainly misinformation and disinformation। इस पर आप लोग पक्का बात करेंगे, किसी ने पेपर इस पर लिखा होगा, लिखा है इस पर मिसइंफॉर्मेशन। तो जब वो बोलने के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर सहमत हो रहे हैं कि आपस में आने जाने के लिए ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन के बीच में आने जाने का थोड़ा सा सहूलियतें हों, क्योंकि उस दीवार को पार करते करते 1961 से 1989 तक 28 साल तक वो दीवार रही। 156 लोग मारे गए केवल बर्लिन वाले हिस्से में। 156 people they were killed because they tried to cross from East Germany to East Berlin to West Berlin, and the number was much higher when you take into account the entire wall in East Germany to West Germany. So when this press conference was being conducted by this gentleman who was a government official, so he said that today we met and we had a meeting and we are thinking of having these are the points on which we can agree. And very soon people from East Berlin will be able to go to West Berlin. West Berlin चूँकि बहुत अमेरिका के कंट्रोल वाला था, आप सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर संबद्धता ज़्यादा थी, तो ईस्ट बर्लिन से लोग वहाँ जाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते रहते थे। कोई हवा के गुब्बारे में बैठ के वहाँ जाके कूद जाता था, टनल्स लोगों ने बनाई, तरह तरह के आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा मामला है। एक अभी हाल ही में मैंने एक किताब बुलाई पढ़ने के लिए, चेक पॉइंट चार्ली। इट्स अ वेरी फेमस बुक, आई गॉट इट यस्टरडे ओनली। चेक पॉइंट चार्ली अमेरिका का वो था, सिक्योरिटी गेट था। तो कई बार वहाँ ईस्ट वेस्ट बर्लिन के बीच में ऐसे मामले आए कि विश्व युद्ध होते होते बचे। खैर वो एक लंबी कहानी है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चल रही थी, तो उसी दौरान एक पत्रकार ने कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि दैट थिंग्स विल बी ईजी एंड देयर विल बी इजी मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम ईस्ट बर्लिन टू वेस्ट बर्लिन, सो व्हेन दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये इनको पता नहीं था, इनके क्योंकि ये तक ब्रीफ नहीं थे, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। तो इनके मुंह से निकल गया कि दिस वुड कम इनटू फोर्स इमीडिएटली। वो जो कागज वहाँ पर रखे हुए थे, गड़बड़ी में जब पत्रकार लोग सवाल पूछते तो अच्छे अच्छे लोग गड़बड़ाते, उन्होंने कहा अभी से लागू हो जाएगा। सो द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंडेड एट 6:53 और 7:01 पर। By 7 o'clock, thousands of people they went to Berlin Wall with axes, with all these tools, and they started pulling down the wall. जितने भी वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे वो सब देख रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए भी कोई इस तरह का संदेश नहीं था रूस से कि भाई आज से ये खत्म हो रहा है, डेट उसमें कोई आगे की तय हुई थी। तो एक आदमी की मिस इन्फॉर्मेशन से जो
विश्व जो कोल्ड वॉर जो खत्म होना था, खत्म तो होना ही था, वो बाद में खत्म होने के बजाय पहले ही खत्म हो गया। तो समटाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन कैन बी गुड, बट ज्यादातर समय मिस इन्फॉर्मेशन से नुकसान ही होता है। The examples of lynchings we are seeing all because of misinformation and disinformation. So you people will be discussing all these things. I don't want to take much of your time. I have also written something for this research journal, so maybe you can read it. And I don't want to repeat that here. And once again, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बहुत सारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं जो भोपाल के बाहर के हैं, वो नहीं आ पाए क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन अखबारों में आज जो छपी कि बड़ा वैसा होने वाला है, उस डर के मारे बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाए। और हम लोग आशा करते हैं कि शाम तक या कल तक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस से वो सब लोग यहाँ पहुँचेंगे। हमारे विद्यार्थी भी इसका अधिक से अधिक लाभ लें, ऐसी भी मैं आशा करता हूँ प्रोफेसर श्रीवास्तव। और अधिक से अधिक आप लोग इसको एक लाइव उसमें वो करें एंड होपफुली इट विल बी रिकॉर्डेड, पूरी कॉन्फ्रेंस लाइव रिकॉर्ड है। और यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स है वो आप छापेंगे तो वो सभी छपे एंड दिस बिकम्स अ लैंडमार्क फॉर आवर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। क्योंकि बर्लिन वॉल वो भी 30 साल हुए हैं टूटे हुए, हम भी 30वें साल में हैं। वो एक अच्छा उम्मीद था दुनिया के खुलेपन का, और हम लोग भी 30वें साल में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, ये कार्यक्रम पूरा है। पवित्र जी आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, गुड थिंग। एंड आपने जो कम समय में जो पूरा छापा है, ये जर्नल छापा है, दिस इज ऑल्सो कमेंडेबल। आप इसको हमने पहले तो नहीं लीक कर दिया, तो ये भी बड़े उसकी बात है कि हमारे यहाँ इन हाउस टैलेंट इतना है जिसको अब अवसर मिल रहा है। तो सभी लोग पण प्राण से लगे हुए हैं, लोग कोशिश सब लोग कर रहे हैं और अच्छी दिशा में कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन। हमारे डायरेक्टर साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे रजिस्ट्रार साहब बैठे हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जाम, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोगों का बहुत, सभी लोग बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। इन लोगों से भी आप लोग खाली समय मिले तो जब आप बातचीत करेंगे तो आपके लिए और नए नए वो लोग सीधे यहाँ पर तो कोई पेपर प्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। आप लोग कर रहे हैं क्या? आप लोग नहीं, आप कर रहे हैं पेपर प्रेजेंट, सेशन चेयर सब लोग सेशन चेयर कर रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ रहेंगे, उनसे आप अधिक से अधिक बात करें, यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस एंड please let Mr. Pavitra Srivastava know if you want to have any suggestions for this. And ज़्यादातर हमारे अपने scholars हैं जो यहाँ पर PhD करने वाले हैं, तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा अच्छा आप लोग कुछ करिए। पूरा विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग आपके साथ बहुत